So as I mentioned yesterday, today Ambekar sir is going to explain you about how to create a data flow diagram. Okay. After that, we'll continue with DS lecture. Ambekar sir, Yes, madam. you can begin the session. Yes, sure. I'm audible, madam? Yes, sir. Okay. Let me share the screen. Yes, sir. Okay. Good morning, all. Good morning, madam. Good We'll morning. start with today's topic, and that I will try to cover in brief as much as possible. The topic is data flow diagram. What are data flow diagrams? How to draw data flow diagrams? What is the significance of data flow diagram? What is the purpose? What is the objective of data flow diagram? Before understanding what is data flow diagram and all the aspects related with data flow diagram, I think we must understand what is system. Can anyone please define what is system? Can anyone please define system? Many times we use this word in our day-to-day life. We use system. That was a very great system. That was a very poor system. What is that system? Sir, a set of things working together as a part of a mechanism. Very good, very good. So system can be defined. Definition can be multiple, but the what you shared is a very appropriate definition. System is nothing but a group of things or group of objects which work together, and they work together as a part of a mechanism to accomplish certain objective. So that is called as a system. So system is a group of objects or things which work together as a part of mechanism. So that mechanism may be called as a set of rules, set of regulations, and then it becomes a system. So let us try to understand some of the examples of the system. One of the simplest example we discuss is banking system. So there is a banking system. So what is banking system? We may be consumers of that bank, or we may be the customers of the bank. So we may have a saving account or current account or fixed deposit, and there is a banking system or banking administration system or banking managers that they work along with us. So our objective is we want to either deposit money or we want to withdraw money, and then the bank will allow us to deposit or withdraw. So so different people or different objects, they work together and it becomes a banking system. Another example is ATM system. So when we go to ATM, how the ATM system works? There is an ATM machine before us. So we need to insert first our ATM card. Then the system will read that card. System will ask our credentials like login, password, and all those things. After verification, then the system will ask us whether you want to withdraw, whether you want some inquiry or all those things. So that's the ATM system. I take a current example. We are going through this online lecture. This is also one system. What is the system? Online lecture is conducted through a Zoom platform. So one is a host. So in this case, Ramya madam is a host, and we all are participants along with her. So there is a system that madam has invited us. So that means madam has shared a link to us. Then using that link and then using our login and password, we entered into this Zoom meeting room.
and we are going through this lecture. So this is also system. So when you look around, you get a multiple examples of the system. Now the question is, where then comes the data flow diagram? Now once again, to understand this data flow diagram, we must understand first basically what is the objective of this data flow diagram. And to understand, we must understand what is the process to develop a software, because here we are talking about the systems from the perspective of the software systems. ये जो भी सारे systems है, इसका लिए हमें एक software develop करना है. So what is the process to develop a software? Is that if we want to develop a software, we directly start with the coding, we directly start with the program? Absolutely not. Nobody can directly start with the programming part. तो आप किस तरीके से, अगर आपको लगता है कि yes, यहाँ पे हमें एक सॉफ्टवेयर बनाना है, जैसे अगर अटेंडेंस मैनेजमेंट का आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, या टाइम टेबल मैनेजमेंट का सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपको एक रिजर्वेशन सिस्टम का, जैसे मूवी टिकट रिजर्वेशन सिस्टम के लिए अगर किसी ने बोला आपको सॉफ्टवेयर बनाना है, या आपको अगर आपका स्टूडेंट जो टेक्निकल इवेंट्स है उसका एक मैनेजमेंट के लिए आपको एक सॉफ्टवेयर बनाना है. सो दैट मीन्स there is a task, there is a problem before you, and you are supposed to create or write a software. So will you directly start with the software? Will you directly start with the programming? Absolutely not. So what is the process to develop a software? The first step is define a problem, because developing software is nothing but developing a solution. But how can I get a solution, or how can I get a meaningful solution if I can understand a problem? अगर मुझे प्रॉब्लम ही समझ में नहीं आएगा तो मैं सॉल्यूशन कैसे डेवलप कर पाऊंगा? या हो सकता है कि प्रॉब्लम समझ में आया लेकिन प्रॉब्लम इज नॉट अंडरस्टूड क्लियरली और नॉट एप्रोप्रिएटली, तो प्रॉब्लम आधा अधूरा समझा है, तो मेरा जो सॉल्यूशन रहेगा, मेरा जो सॉफ्टवेयर रहेगा, वो भी आधा अधूरा रहेगा. दैट विल नॉट कैटर टू द नीड्स ऑफ, और दैट विल नॉट कैटर टू द रिक्वायरमेंट्स. तो सबसे पहली चीज क्या होती है, हमें सॉफ्टवेयर डेवलप करने में सबसे पहले हमें प्रॉब्लम को डिफाइन करना होता है. यस, दिस इज अ वे, दिस इज अ प्रॉब्लम एंड दिस इज माय सॉल्यूशन. सो यू नीड टू डिस्क्राइब दैट प्रॉब्लम एंड हाउ द सॉल्यूशन विल एक्चुअली मीट द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दैट सिस्टम. तो ये सबसे पहला स्टेप होता है हमारा प्रॉब्लम डेफिनेशन. उसके बाद हम क्या कहते हैं कि अब वो सॉल्यूशन तो फाइंड आउट करना है, तो उसके लिए काफी सारे रिक्वायरमेंट्स लगेगी हमें, तो उसका रिक्वायरमेंट्स का आप एनालिसिस करते हैं. अब वो सिस्टम में there are multiple people or multiple things related with each other, or they are part of that, so that is called as a stakeholder. Stakeholder usually it is defined as the people or the person who may be directly or indirectly impacted with the success or the failure, so they are called as a stakeholder. So who are stakeholders, what are their requirements, what do you want from? So ये पहला स्टेप हमारा हो गया प्रॉब्लम डेफिनेशन का. दूसरा हो गया हमारा रिक्वायरमेंट एनालिसिस का. अब इस एनालिसिस को हम क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप में हम उसको डिजाइन करते हैं उसका. फिर ये डिजाइन जो एक बार हो गया हमारा कि यस इस तरीके से सिस्टम वर्क होगा, तो उस डिजाइन को ट्रांसलेट करते हैं हमारे प्रोग्रामर्स या हमारा कोडिंग में. तो द नेक्स्ट स्टेप इज हमारा कोडिंग या प्रोग्रामिंग. एंड देन आफ्टर दैट जो हमने प्रोग्राम लिखा है, क्या वो सही इसमें चल पाएगा, विल इट वर्क, but it should work today, it should work tomorrow, it should work day after tomorrow also, it should work in one situation, it should also work in other situation. तो हमें उसके बाद क्या करना होता है, उसका टेस्टिंग करना होता है. and the last is a maintenance, delivery and maintenance. So this is a usual software life cycle, and this is for every software. So whatever the nature of the software, but if you want to develop a software, you have to undergo this cycle. So what is the first step? Problem statement, definition of problem statement. Second is requirement analysis. Third is design. Fourth is coding or programming, and then testing, and then maintenance. And then when it comes to this data flow diagram, तो जब तक के जैसे मैंने आपको कहा कि प्रॉब्लम का अंडरस्टैंडिंग नहीं होगा तो सॉल्यूशन नहीं होगा. तो जब तक के मुझे सिस्टम की अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी तो आई कैन नॉट डेवलप अ सिस्टम. तो मेरा अंडरस्टैंडिंग सिस्टम का अगर है, so I may have a different role in that software development. I may be designer, I may be analyst, I may be a coder, I may be tester, but it is necessary. ये जो सॉफ्टवेयर हमेशा डेवलप होता है ये टीम में डेवलप होता है, और ये they are all team members. तो हमें पता है कि अगर कोई टीम का परफॉर्मेंस कैसे अच्छा रहेगा, अगर कोई इंडियन क्रिकेट टीम है या इंडियन बास्केटबॉल टीम है, तो सिर्फ एक या दो प्लेयर अच्छा करने से वो टीम का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं होगा. टीम का परफॉर्मेंस तब अच्छा होगा जब टीम के सारे प्लेयर्स
अपने जो उनका जो मोटिव है, जो टीम स्पिरिट है, उसको यूज कर वो टीम में अपना प्ले करेंगे, देन एंड देन द टीम विल सक्सीड। तो एक अच्छा सॉफ्टवेयर तभी डेवलप होगा जब ये सारे जो डिफरेंट people are involved in that software development, they will work efficiently and they will work with the appropriate, you can say, the requirement of that software. Then and then the software developed will be successful, which will actually meet the requirements of the problem. अब ये कब होगा फिर? then we may say yes, everyone should work. So what's the problem? That programmer will also work, tester will also work, designer will also work. उसमें प्रॉब्लम क्या है? बट प्रॉब्लम कहाँ पे आता है? Always there is a problem with the information gap, ki communication gap. So communication gap means a lack of understanding regarding the system, lack of understanding regarding the objective of the system. If it is not known, it is known only to the programmer, it is known only to the designer, but if it is not discussed with these along with these all members, then there is a problem. तो हमें यहाँ पे जरूरत क्या होता है एक अच्छे सॉफ्टवेयर के लिए? सिस्टम का अंडरस्टैंडिंग सभी प्लेयर्स, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में प्लेयर्स है, इनको सबको ये अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए। तो ये अंडरस्टैंडिंग कब होगा? व्हेन यू कैन डिस्क्राइब अ सिस्टम। सो देयर आर मल्टीपल वेज वेयर यू कैन डिस्क्राइब अ सिस्टम, एंड वन ऑफ द इजीएस्ट वे टू डिस्क्राइब योर सिस्टम इज डेटा फ्लो डायग्राम. So here comes what is a data flow diagram, or what is the purpose of data flow diagram? It is nothing but it is a description of in a simple language I can say it is a description of the system. So when I talk about my system with the help of data flow diagram, I can easily describe a system. So once that description is given to any of the member or any of the stakeholder, they will okay, in this way the system works. So when we are talking about a system here, in this case it's a software system or it's an information system. So one of the most vital component in this system is the information or data. So this data may come from one source, data may go to another source. So data, the transition of data from one point to another point, or from one component to another component. And since there is a data, since there is a information, there must be database, so storage of the data. So all these things are required there. So this way, using this, we can describe a system. Now we'll first go to the formal definition of DFD or data flow diagram, and then we'll see what are the components and how to draw data flow diagrams. So data flow diagram model a perspective of a system that is most readily understood by users, the flow of information through the system, and activities that process this information. I can make much more simplification of this definition. You may note down, data flow diagram can be defined as it is nothing but a graphical representation. It is a graphical representation of the system which describes the flow of information from one component to other component. So how are we defining data flow diagram? DFD is nothing but graphical representation. It's a graphical representation of the system where it shows or it depicts the flow of information from one component to other component. So it's nothing but graphical representation. So DFD provide a graphical representation of the system that aims to be accessible to computer specialists and non-specialist users alike. That means ये एक graphical representation है, ये आपके सारे जो, that's why I'm talking the all stakeholders. So stakeholders may be technical stakeholders, that means who are part of your software development team, and there are some non-technical. So for example, suppose I have a business, let's say मेरा एक pharmacy है, chemist shop है, और मुझे आपसे एक software बनाना है. तो मुझे तो कुछ software कंप्यूटर ज्यादा समझता नहीं, मैं एक basic user हूँ कंप्यूटर का. तो I may not understand the technical terms or your programming, your Java, Python, other languages. I don't understand about that thing, but I will give my requirement कि मुझे मेरे फार्मेसी के लिए इस तरीके का सॉफ्टवेयर चाहिए. सो जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा, यू विल नॉट डायरेक्टली डेवलप अ सॉफ्टवेयर, यू विल फर्स्ट डिस्क्राइब अ सिस्टम. तो वो सिस्टम का जो डिस्क्रिप्शन रहेगा, एज अ नॉन टेक्निकल पर्सन भी मुझे समझ में आना चाहिए. तो आप मुझे कहोगे कि यस, आपके ये मॉड्यूल्स रहेंगे, आपके जो कंपोनेंट्स है, और यहाँ से इस तरीके से ट्रांजैक्शंस होगा, इस तरीके से होगा. सो दैट मीन्स DFD इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सिस्टम, एंड दैट it can be accessible by any user. The user may be a technical user, or a user may be non-technical user. Since it is a graphical representation, तो graphical representation है और ये diagram है,
तो डायग्राम में कभी भी नोटेशन रहेंगे या सिंबल रहेंगे. तो इसमें there are only 4 symbols. Let us see what are those 4 symbols. The first symbol is called as a process. The process is called as basically it's a business activity or it's a transaction. The activity is carried out by a system which use and transform information. Process are noted as a rectangles with 3 parts such as order, supplies and make payments. मैं आपको notation भी दिखाऊंगा. तो एक पहला symbol क्या है हमारा process. Process का मतलब है एक activity. जैसे अगर एक एग्जाम्पल के तौर पे हम देखते हैं कि अगर एक कस्टमर बैंकिंग सिस्टम में जाते तो मैं बैंकिंग का कस्टमर हूँ, जैसे हमारा कॉलेज में है आंध्रा बैंक या कैनरा बैंक, और वहां पे मुझे मेरा जो कस्टमर प्रोफाइल है उसको अपडेट करना है, तो आई विल प्रोवाइड दैट इंफॉर्मेशन. तो ये क्या हो रहा है, एक प्रोसेस हो रहा है. तो जब मैं मेरा जब एज्यूम कि माय एड्रेस इज चेंज एंड नाउ आई वांट टू अपडेट माय एड्रेस, तो मेरे जो कस्टमर रिकॉर्ड्स है उसके लिए मैं एक प्रोसेस कर रहा हूँ. तो एक तो मेरा नॉर्मली क्या रहेगा कि एक तो वो दे विल प्रोवाइड मी फॉर्म, बट नाउ टुडे एवरीथिंग वर्क्स थ्रू सॉफ्टवेयर. सो थ्रू सॉफ्टवेयर आई विल गेट or through their application I will get a kind of a format where I will update my address. They will verify whether I am the actual customer. So आपको सबको पता है कि जो वेरिफिकेशन होता है वो nowadays the one of the most trusted verification method is OTP based. So they will ask me to verify OTP. Once my OTP is verified, that process will be completed. That means my address will be updated. तो एड्रेस कहाँ पे अपडेट होगा, उनके एक जो डेटाबेस रहेगा वहां पे होगा. तो फर्स्ट नोटेशन या फर्स्ट सिंबल रहेगा प्रोसेस का. प्रोसेस इज एक्टिविटी और ट्रांजैक्शन यू कैन से वहां पे हो रहा. वी विल डिस्कस दिस अगेन विद नंबर ऑफ एग्जांपल्स. और इसका सिंबल क्या होगा, एक तो रेक्टेंगल आप यूज कर सकते हैं या सर्कल या ओवल जैसा आप वहां पे यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट है हमारा जो नोटेशन है वो रहेगा डेटा फ्लो. Data flow is nothing but an arrow symbol which describes or depicts कि डेटा जो है उसका फ्लो कहाँ से कहाँ तक जा रहा है. जैसे मैंने आपको कहा कि जैसे कस्टमर, तो मैं डेटा फ्लो कर रहा हूँ, तो वहाँ पे मैं जब इनपुट दे रहा हूँ वहाँ पे कि यस दिस इज माय एड्रेस अपडेट, तो आई एम प्रोवाइडिंग इनपुट दैट माय एड्रेस, तो वहाँ से वो डेटा कस्टमर से जाएगा बैंकिंग सिस्टम में. सो डेटा इनपुट्स and outputs from these activities, data flows are noted as named arrows. Then third symbol है हमारा वहाँ पे external activity, external entities or simply entities. तो entities is nothing but a object or a thing which works within that system. जैसे बैंकिंग सिस्टम में कस्टमर एक एंटिटी है, बैंक मैनेजर है, बैंक एडमिनिस्ट्रेशन एक एंटिटी है. अगर हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट की बात करेंगे तो उसमें पेशेंट एक एंटिटी है, हॉस्पिटल एडमिन एक एंटिटी है, डॉक्टर्स एक एंटिटी है, पैथोलॉजिस्ट जो होता है वो एक एंटिटी है, लैब टेक्नीशियन जो है वो एक एंटिटी है. सो एंटिटीज आर द सम ऑफ द ऑब्जेक्ट्स which work with that system, and these external entities, that means they are not they are working with that system outside from that system, and that's why they are called as external entities. Then the fourth symbol is called as a data store. Data store is nothing but a database. जहाँ पे आप उस डेटा स्टोर, द नेम इटसेल्फ सजेस्ट कि जहाँ पे जब भी इंफॉर्मेशन वहाँ पे अगर इंफॉर्मेशन इज प्रोवाइडेड देयर, सो इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड. जैसे अभी कस्टमर रिकॉर्ड इज अ काइंड ऑफ अ डेटा स्टोर, या पेशेंट रिकॉर्ड इज अ डेटा स्टोर. तो यहाँ पे पेशेंट की इंफॉर्मेशन, कि पेशेंट के जो भी उनके हेल्थ इंफॉर्मेशन या उनकी पेमेंट इंफॉर्मेशन, तो वो फाइनेंशियल डेटाबेस में स्टोर होगा. तो ये 4 सिंबल्स हम यहाँ पे यूज करते हैं. Then the next thing is called as so ये 4 सिंबल को लेकर हम डेटा फ्लो डायग्राम we can draw. Now I can understand कि ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैंने आपको अभी तक वहाँ पे डायग्रामेटिकली दिखाया नहीं. First we'll discuss theoretically what is this, and then we'll go to the diagrammatical view. तो ये अभी तक हमने देखा what is DFD, हमने ये भी देखा what is the purpose of the DFD or what is the objective of the DFD. I hope you have understood this thing. What is DFD? What is the objective? हमें DFD क्यों यूज करना है? क्योंकि हमें सिस्टम को डिस्क्राइब करना है. सिस्टम को डिस्क्राइब करना है, यानी सिस्टम के साथ हमने सिस्टम को देखा पहले. सिस्टम इज नथिंग बट ग्रुप और ऑब्जेक्ट्स व्हिच वर्क टुगेदर एज अ पार्ट ऑफ. तो अगर कोई सिस्टम में, तो सिस्टम में कुछ जो एंटिटीज है
वो एक दूसरे के साथ जब इंटरेक्ट कर रहे हैं तो नेचुरली दे विल एक्सचेंज इंफॉर्मेशन. सो इंफॉर्मेशन और डेटा विल फ्लो फ्रॉम वन कंपोनेंट टू अदर कंपोनेंट. तो इनके बीच में इंफॉर्मेशन किस तरीके से हो रहा या इंटरेक्शन किस तरीके से हो रहा, दैट इज नथिंग बट योर सिस्टम डिस्क्रिप्शन. तो ये सिस्टम डिस्क्रिप्शन को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं DFD से. तो नेक्स्ट क्वेश्चन कम्स इज, are there categories or are there different types of DFDs? Yes, there are different types of DFDs. They are called as different levels of DFDs. So level 0 DFD, level 1 DFD, level 2 DFD. Level 0 DFD is called as a context diagram. Level 0 इसका मतलब the broader view of the system. एकदम जो broader level है, जो वो व्यू को कहा जाता है context diagram. फिर आप और उसमें डिस्क्राइब करते हो और उसको डिटेल में जाते हो, देन इट कम्स टू द लेवल 1. सो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डिकम्पोजिशन. तो मेरा एक लेवल 1 क्या है कि जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हॉस्पिटल मैनेजमेंट सिस्टम. तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट में ब्रॉडर लेवल पे मैं क्या दिखाऊंगा, एक तरफ पेशेंट है और एक तरफ हॉस्पिटल एडमिन है. इन दोनों के बीच में जो इंटरेक्शन होगा वो लेवल 1 लेवल 0 होगा. तो पेशेंट इंटरेक्टिंग विद द हॉस्पिटल डिपार्टमेंट. अब इसको मुझे और डिटेल में देना है क्योंकि ये तो सिर्फ बेसिक लेवल का होगा कि चलो पेशेंट और हॉस्पिटल के स्टाफ में डिस्कशन हो रहा है, बट पेशेंट किस तरीके से इंटरेक्ट कर रहा है या हॉस्पिटल का जो एडमिनिस्ट्रेशन है किस तरीके से कर रहा है. सो देन आई विल फर्दर डिकम्पोज दिस सिस्टम एंड दैट फर्दर डिकम्पोजिशन विल बी कॉल्ड एज अ लेवल 1 DFD. अब लेवल 1 में एक डिस्क्रिप्शन दे दे, लेकिन आपको लगता है कि और इससे हमने डिटेल में जाना चाहिए, तो उसके जितने आप डिटेल में जाओगे तो वो होगा लेवल 2. आप और उसमें जो कंपोनेंट्स है उसको और ज्यादा डीप में उसको डिस्क्राइब करते हो. देन इट कम्स टू लेवल 3, देन लेवल 4. इज देयर एनी रिस्ट्रिक्शन? नो, इट इज अप टू अस और इट इज बेसिकली बेस्ड ऑन द नेचर ऑफ द सिस्टम. अगर सिस्टम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है तो उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमें ज्यादा उसको डिकम्पोज करना होगा. सिस्टम अगर सिंपल है तो शायद लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 तक उसका हमारा डिस्क्रिप्शन हो जाएगा. तो ये it depends upon the nature of the system, how complex is or how are the different objects which are working that with that system. वो जितने ज्यादा है उतना उसका decomposition हमें उसकी जरूरत लगेगी. Now we'll move to the another part, that is we'll see now graphical elements of data flow diagram. जैसे हमने अभी discuss किया process, data flows, data store. So here you can see this is the symbol of the process. I have just told you that the process can be depicted either through rectangle. So this is one notation, but somewhere you will also see a circle or oval shape that also can be used for the process. Process क्या है? Process are essential activities carried out within the system boundary that use information. A process is represented in the model only where the information which provides the input to the activity is manipulated or transformed in some way so that data flowing out of the process is changed compared to that which flowed in. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे हम सबको एक इंफॉर्मेशन हमेशा बैंक शेयर करता है कि यू शुड चेंज योर पिन पीरियडिकली. तो मुझे मेरा पिन चेंज करना है, ATM पिन चेंज. तो व्हाट आई डू, आई गो टू द ATM. तो ATM में जैसे मैं मेरा इंसर्ट कार्ड करता हूँ, कार्ड को रीड करने के बाद यूजुअली मुझे 2-3 ऑप्शंस मिलते हैं. वन इज अ बैंकिंग. तो बैंकिंग यानी फिर अगर इफ आई सिलेक्ट बैंकिंग तो जो बैंकिंग ऑप्शन से डिपॉजिट, विड्रॉल, ये सारे ऑप्शंस होते हैं. कहीं पे किसी सिस्टम्स में नाउ अगेन इट डिपेंड्स ऑन द बैंकिंग, वो उसी में आपको पिन वेरिफिकेशन या पिन चेंज का ऑप्शन दे देंगे. कहीं पे आपको वो सेपरेट ऑप्शन रहेगा या कहीं पे और एक थर्ड ऑप्शन रहेगा अगर आपको प्रोफाइल अगर आपको अपडेट करना है तो देन आई मे चेंज दैट. सो नाउ व्हाट इफ आई एम गोइंग फॉर विड्रॉ, वो एक प्रोसेस हो रहा. इफ आई एम चेंजिंग माई पिन, वो भी एक प्रोसेस हो रहा, बिकॉज आई एम प्रोवाइडिंग सर्टेन इंफॉर्मेशन. तो मैं या आई एम मैनिपुलेटिंग दैट इंफॉर्मेशन. तो जैसे पिन है, ऑलरेडी आई हैव वन पिन एंड नाउ आई वांट टू चेंज दैट, सो आई एम मैनिपुलेटिंग दैट इंफॉर्मेशन. या अगर मैं डिपॉजिट विड्रॉ कर रहा हूँ तो मेरा एक ऑलरेडी वहां पे एक अमाउंट है, उस अमाउंट को अभी मैं विड्रॉ कर रहा हूँ. तो अमाउंट विड्रॉ होने के बाद वो अमाउंट अपडेट भी होगा. तो ये क्या हो रहा है कि जो इंफॉर्मेशन ऑलरेडी है उसको मैं आई एम changing that information or I'm transforming that information. So process is that activity which will impact this information.
either it will manipulate or it will transform that information. So एक तो input होगा और उसके बाद उसका output होगा. जैसे मेरा input दे दिया मुझे कि I need a 5,000 rupees. So this is my input I am providing through that action. और वो 5,000 debit होने के बाद output में change होगा. So process will have input and it will have resultant as a output. अब ये there are certain rules of the processes. Since I have limited time, I will go very quickly. I will first show you some of the diagrams of the DFD, and these rules can be detailed, or I will share you. I have some other presentations also that also can be shared with you. So this is a symbol of data flow. Data flow represents a package of information flowing between two objects in the data flow diagram. Data flows are used to model the flow of information into system or out of the system. अभी information एक तो system में आएगा या system से बाहर जा सकता है. So information may come or information will go out from the system. So that is depicted. So that means that is nothing but a flow of information or flow of data. तो उसके लिए सिंबल क्या है? एरो सिंबल वी यूज. देन रूल्स, ये सारे रूल्स मैं आपको शेयर करूंगा या ब्रॉडर रूल्स मैं आपको बता दूंगा अभी. डेटा स्टोर का सिंबल इस तरीके से आप देख सकते हो. यहाँ पे आप ये सिंबल देख रहे हैं. दिस इज अ सप्लायर फाइल. दिस इज द नेम ऑफ द डेटा स्टोर. डेटा स्टोर इज नथिंग बट अ डेटाबेस, जहाँ पे वो डेटाबेस या डेटा इंफॉर्मेशन स्टोर होना है. जैसे अगर व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट बैंकिंग और दिस एटीएम, तो एक डेटाबेस है जो उनका बैंकिंग का, जहाँ पे अकाउंट इंफॉर्मेशन स्टोर्ड है. बिकॉज व्हेन आई से डिपॉजिट और व्हेन आई से विड्रॉ, सो नेचुरली दैट इंफॉर्मेशन हैज टू बी अपडेटेड इन दैट डेटाबेस. नहीं तो फिर कोई मतलब नहीं कि हमने डिपॉजिट किया, विड्रॉ, इफ इट इज नॉट चेंजिंग दैट थिंग. सो वो होना चाहिए. तो वहाँ पे जो सर्टेन डेटा, सर्टेन इंफॉर्मेशन है दैट नीड्स टू बी स्टोर्ड, तो वहाँ पे वो डेटा स्टोर होता है. This D you can use here. You can see D1. D is D stands for if it is this database is maintained through software or digital, then it is called as a D. If it is maintained manually, अगर जो manual file से है तो उसको फिर हम M से दिखाते हैं. तो ये सिंबल हमने देखा. अभी देखो फर्स्ट सिंबल आपने देखा, ये सिंबल था आपका, फर्स्ट सिंबल था प्रोसेस का, this kind of rectangle. ये जो आप नंबरिंग देख रहे हैं, नंबरिंग also you can use, because I have told you if the system is a complex where a number of objects, where a number of entities who interact with that system, so numbers will help us. या जैसे अभी जैसे ATM का एग्जांपल, I'm repeatedly giving that example because everyone uses that. तो उसका एक प्रोसेस का एक पैटर्न होता है. प्रोसेस का पैटर्न जैसे इंसर्ट, देन उसके बाद रीड, देन उसके बाद वेरिफिकेशन, देन आपका then you process. तो ये numbering करना, then it says, because unless and until I insert card, I cannot go to the other processes. तो ये numbers use कर सकते हैं. ये data flow का symbol हमने देखा. उसके बाद हमने देखा data store का symbol. Then we'll see this external entity symbol. तो यहाँ पे भी अभी जैसे कि आप कुछ notations में देखोगे external entity को they may show through rectangle also. तो यहाँ पे भी रेक्टेंगल का यूज हो सकता है एक्सटर्नल एंटिटी के. सो दीज आर सिंबल्स. कॉन्टेक्स्ट डायग्राम मैंने आपको कहा था कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्रॉडेस्ट व्यू ऑफ सिस्टम. ये एक एग्जांपल है. ये एग्जांपल आपके सामने, आई होप यू कैन सी दिस एग्जांपल इज शोन कि जैसे एक probably your generation may not be much familiar such type of pattern. Before some years, let's say before 20 years back or 25 years back, there was a system where video stores were there, and we used to take video cassettes or video CDs from those video stores. So ये आप यहाँ पे देख रहे हैं, this you can see customer is an entity. This video rental is a system. Supplier is again here you can see this is an entity. यहाँ पे उन्होंने ओवल शेप में दिखाया है. और ये जो आप जो सिंबल्स देख रहे हैं ये डेटा फ्लो. तो ये DFD के इस सिस्टम के बारे में बता रहा है. जैसे कस्टमर, तो कस्टमर एक प्रोसेस कर रहा है कस्टमर डिटेल्स का. दैट मीन्स कस्टमर इज प्रोवाइडिंग कस्टमर डिटेल्स. तो ये सिस्टम में जा रहा, यहाँ से इंफॉर्मेशन इस सिस्टम में मिल रही. यहाँ से इंफॉर्मेशन मिलने के बाद जो सिस्टम है, सिस्टम का भी इंटरेक्शन हो रहा.
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कस्टमर के रोल, कस्टमर इन विच वे कस्टमर में इंटरेक्ट, तो कस्टमर में प्रोवाइड कस्टमर डिटेल्स। अगर जैसे वीडियो रेंटिंग करना है तो कस्टमर हैज टू प्रोवाइड कस्टमर डिटेल्स। जैसे आप एटीएम यूज करते हो तो आपका जो बेसिक डिटेल्स है वो डिटेल्स वहाँ पे होते हैं, विद दैट डिटेल्स देन एंड देन यू कैन यूज। तो अब जैसे वीडियो रेंटल तो उसका पेमेंट लगेगा, सो कस्टमर will enable this process, that is a payment, return of video, membership card, ये these are some of the processes which are related with the customer। फिर ये सिस्टम का जो आप देखो ये सप्लायर, अभी सप्लायर का काम क्या है कि वो वीडियोस जो कस्टमर डिमांड कर रहे हैं वो वीडियोस अवेलेबल करके देंगे। तो यहाँ पे वो सिस्टम को बता रहा, जैसे अगर मुझे कोई वीडियो सीडी चाहिए या कुछ मूवी देखना है तो आई मे डिमांड दैट, बट इफ इट इज अवेलेबल और नॉट, तो ये अवेलेबल है या नहीं है, दैट विल बी गिवन टू द सिस्टम, एंड थ्रू दैट I will come to know whether it is available or not. Okay, you can also think about a system of this, how it works like this big basket. The big basket mein, because now particularly in this pandemic, most of the people are using such kind of services. So आप जो grocery आपको जो purchase करना है, तो you provide that information or you apply that process, and then you will get information whatever you are demanding, whether it is available or not. If it is available, अगर आपको चाहिए जो भी, अगर जो vegetables चाहिए, and if it is available in that quantity, then the next thing is you need to make a payment. तो जब फिर आपका prepaid भी they provide, या you may make out a payment. Once you make out a payment, then they give you confirmation. You take another example of Swiggy, Zomato. तो आप you choose कि आपका जो food है, you first search your food, so that is a process कि then you may search your restaurant, फिर restaurant में आप आपका जो आपको जो food items ये करना है, then you choose that, उसका फिर आप payment करते हो, फिर वहाँ से आपका order confirmation आता है, order confirmation के बाद then also they share the information that 20 minutes time will be required to deliver, then they will provide, जैसे Domino's होगा, या they will provide कि जो उनका जो pickup person है has left and now 15 minutes, 10 minutes. So what is this? That is nothing but a system working, and the system provides information. So this is one example. I will show you some more examples which will make you clear about this thing. So labels we have discussed. So that was a broader view. So this may be called as a context diagram, because this is a very broader view of the system. When you decompose that with the finer details, तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि ये और detail है उसी system को. Here you can see this kind of line. This is nothing but these are duplicate entities. क्योंकि उस system में वो entity number of times या in different way is interacting. तो इस तरीके से भी आप डिपिक्ट कर सकते हो. जैसे होता है ना कि रिप्रेजेंटेशन है ग्राफिकल, जैसे so that will vary from one person to other person. So when you see 10 people are going to any garment store, तो 10 लोग अगर एक बार वो गारमेंट स्टोर में गए, तो ऐसा तो होगा नहीं कि 10 के 10 लोग एक साथ एक ही जैसे ट्राउजर्स they will buy. So if you see all are buying trousers, but you will see their likes, their budget and all those things, and what they want. So thus look, there's different types here, there's different companies ke trousers they will purchase. So what is this? It depends upon that user, it depends upon that person. So similarly, though DFD has a certain rules, but how the rules are used and how they are depicted, that also may vary from one team to another or from one system to another. So that's why I told you, somewhere you see rectangle, somewhere you see oval, somewhere you see description only in a broadest form, that is a context diagram, somewhere you need a more decomposition. So that depends. So you need to fix, you need to decide which way it is better. So ये एक evolving होता है. तो ये ऐसा नहीं कि there is no fixed rule. You know, this is a way a DFD should be drawn. So, but the basic things you have to use, that means 4 things you have to use: process,
आपको यूज करना है, उसमें एंटिटी आपको यूज करना है, डेटा फ्लो यूज करना है और डेटा स्टोर आपको यूज करना है। तो दिस इज अ लेवल 1 DFD ऑफ द सेम वीडियो रेंटिंग सिस्टम। सो आप ये मल्टीपल टाइम्स यू कैन सी हियर कस्टमर, सो बिकॉज ऑफ दिस लाइन इट शोज इट्स अ मल्टीपल एंट्री। ये यहाँ पे आप सप्लायर देख रहे हैं। जब भी इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है, जैसे कस्टमर फाइल, तो ये कस्टमर का जो इंफॉर्मेशन है कस्टमर फाइल, तो यहाँ पे वो डेटा स्टोर में हमने डिपिक्ट किया यहाँ पे। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि क्रिएट न्यू कस्टमर, आई कैन रीड सम ऑफ द थिंग्स, कस्टमर विल रिटर्न वीडियो, तो loan of videos. So whatever way the customer is interacting, that is depicted in this diagram. अब एक और एक सिंपल एग्जांपल आपके सामने इधर है, जैसे दिस एग्जांपल आल्सो इज अ वेरी फैमिलियर टू ऑल ऑफ अस। स्टेट एजेंसी, ये स्टेट एजेंसी क्या होता है या रियल एस्टेट ब्रोकर क्या होता है? उसके पास जो बायर और सेलर है उनका एक रिक्वायरमेंट है, मुझे एक तो कोई फ्लैट रेंट पे चाहिए या मुझे कोई फ्लैट सेल पे चाहिए। तो I may want a flat on rent and somebody wants to let it on rent, तो दोनों का रिक्वायरमेंट है, तो हम दोनों का कांटेक्ट एक दूसरे के साथ नहीं हो सकता है। So we approach a estate broker who has a contact of a person who wants to let it on rent or who wants to sell and who wants to buy or who wants to take it on rent। तो वो हो गया हमारा स्टेट एजेंसी और स्टेट ब्रोकर। तो इसमें आप देखो कि एक हो गया क्लाइंट और एक हो गया बायर, तो इनके बीच का ये कॉन्टेक्स्ट डायग्राम है। तो ये क्लाइंट क्या करेगा, विल स्टार्ट अ प्रोसेस ऑफ पेमेंट। जैसे पेमेंट हो गया तो पेमेंट कंफर्मेशन, तो स्टेट एजेंसी क्या कर रहा, इनवॉइस उनको बना के दे रहा। अगर क्लाइंट का पेमेंट पेंडिंग है, बिकॉज ये सर्विस आई एम एक्सेसिंग थ्रू स्टेट एजेंसी, और एक डील हो गया कि आपको सर 3000 रुपीज आपको पे करना होगा, और आप इनिशियली यू मे मेक आउट अ पेमेंट ऑफ 1000 रुपीज एंड आफ्टर 10 days यू शुड मेक द रेस्ट ऑफ द पेमेंट। बट 10 days हो रहे या 9 days हो गया, तो स्टेट एजेंसी विल सेंड मी पेमेंट रिमाइंडर। तो ये इन्फॉर्मेशन मुझे मिल गया, तो जैसे ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास आ गया तो आई विल मेक अ पेमेंट या आई शुड मेक अ पेमेंट। तो इस तरीके से ये यहाँ पे हो रहा। तो आप देख सकते फिर जैसे क्लाइंट है तो वो क्या करेंगे, क्लाइंट अपना जो हाउस डिटेल्स दैट विल बी शेयर्ड विद द स्टेट एजेंसी। अब बायर क्या करेगा, अपने बायर डिटेल्स देगा कि मुझे ये मेरा रिक्वायरमेंट्स है इस तरीके से। स्टेट एजेंसी क्या करेगा, उस बायर को जो सिलेक्टेड प्रॉपर्टीज है, जो उनके पास ऑप्शंस है एज पर द नीड्स ऑफ द बायर। आई होप यू आर गेटिंग दिस थिंग। तो अगर मुझे रेंट पे देना है या तो मैं अपना एक पेमेंट करूंगा और स्टेट एजेंसी सपोर्ट देगा, और जो बायर है उससे आपको वहां पे सपोर्ट में। सो इन दिस वे interaction happens with the different entities and in this way data flows। अब इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डेटा स्टोर वगैरह यूज नहीं किया, बिकॉज दिस इज वेरी ब्रॉडर व्यू डेटा स्टोर का जो डिपिक्शन है। नेक्स्ट इसमें अब ये नेक्स्ट लेवल पे हम जाते हैं, तब हम देखते हैं कि एम्प्टी लेवल DFD। ये एक प्रोसेस होता है कि जिसमें आप पहले then the question comes before us as a student is okay, in this way we can draw DFD, but how to start that process। तो प्रोसेस है हमेशा, आप पहले हमेशा लेवल 0 DFD बनाने की कोशिश करो, फिर उसको लेवल 1 में कन्वर्ट करो एंड देन यू कैन कन्वर्ट इट टू लेवल 2 लेवल 3 एज पर द रिक्वायरमेंट। बट हमेशा उसका जो शुरुआत होना चाहिए वो लेवल 0 से। जो लेवल 0 है उसमें एटलीस्ट आपके जो एंटिटीज है और आपके जो बेसिक इंटरेक्शंस है ये वहां पे डिपिक्ट हो जाएंगे, फिर आप फाइनल डिटेल्स। So that's what this is called as empty DFD, empty level DFD, because you are trying to here depict the interaction। जैसे इस सिस्टम के साथ स्टेट एजेंसी, क्लाइंट, बायर और क्लाइंट के जो डिफरेंट इंटरेक्शंस हो गए, और सिस्टम से क्या बाहर जाएगा या सिस्टम से इंफॉर्मेशन कहाँ पे, बिकॉज हियर यू कैन सी दिस इज अ सिस्टम, और यहाँ से ये एंटिटी से इंफॉर्मेशन सिस्टम के पास आ रहा, and system now is taking that information or giving that information to these entities। So in this way information comes and information goes out of the system। This is data flow is added। अभी यहाँ तक यहाँ पे data flow नहीं दिखाया था, यहाँ पे सिर्फ the way they can interact was shown। अब यहाँ पे data flow को add किया। data flow को add करने के बाद अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे ये प्रोसेस हो गया। तो ये यहाँ पे उनका जो प्रोसेस है, ये एंटिटीज और ये प्रोसेस, देखो ये प्रोसेस इज डिपिक्टेड बाय दिस रेक्टेंगल, एंटिटी इज डिपिक्टेड बाय ओवर। सो एंटिटीज क्या है, क्लाइंट, बायर। ये लाइन क्या दिखा रहा है कि ये मल्टीपल टाइम्स हमने डायग्राम में दिखा है कि हमने, बिकॉज एक ही जगह पे अगर हम उसको रिप्रेजेंट करते तो देन इट विल बी
the diagram would be very complex. What is the purpose of the diagram? कि जब कोई चीज कहने के लिए हमें 1000-2000 words लगते हैं usually, तो आप instead of saying those things you can depict to one diagram. लेकिन अगर वो diagram अगर इतना complex होगा तो फिर उसका meaning नहीं रहेगा. तो diagram का भी एक importance ऐसा होता है कि उसको you must try to simplify. तो ये simplification के लिए हम multiple times उसको use कर सकते हैं. Otherwise you will see in some of the DFDs they will show only once. But अगर एक ही जगह अगर मैंने ये client को दिखाया तो मेरा जो arrows है वो एक दूसरे के साथ मुझे overlapping दिखेगा diagram में. Whereas in this diagram you can see the diagram to understand is very much simple. Here you can see now data. यहाँ से आप देख सकते हो वापस कि यहाँ पे जो entities है वो process को initiate कर रहे हैं. तो client जैसे एग्जांपल के तौर पे हाउस डिटेल्स और ये आपका प्रोसेस है, ये रिकॉर्ड करता है न्यू क्लाइंट के बारे में, ये बायर रिकॉर्ड न्यू बायर के बारे में. ठीक है, फिर यहाँ से इस प्रोसेस के बारे में जैसे हमने बताया था, प्रोसेस में इनपुट आएगा और प्रोसेस में इनपुट आने के बाद प्रोसेस से आउटपुट भी होगा, उसका रिजल्टेंट भी होगा. तो यहाँ से मैच प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी के डिटेल्स आ गए और उसके बाद मैच बायर के साथ हो रहा. तो दिस इज द वे वेयर DFDs आर ड्रॉन. So here you can see level 1 and level 2 DFDs. I will just show you two more diagrams and I hope you are getting this. If you are getting, please reply with yes in your chat box. I will take just 2 minutes. I would like to show you two simple diagrams. Let me check. Yes. Okay, here I'm showing you some online examples only. This is a hospital management system. You can see. If you are really understanding, then you can reply with yes in your chat box. I can understand because we discuss much theory. Okay, but there is a process you can follow. There are a number of online resources available which you can use to draw your diagrams. Number of software is also available. You understand? Okay, so here you can see this hospital management. So hospital staff और फिर ये उनके जो processes है, तो hospital staff ये entity process क्या है, login करना पड़ेगा उनको, room add करेंगे, add doctor करेंगे, add patient करेंगे. So here you can see data कहाँ से जा रहा, request to login, फिर यहाँ से वापस output जा रहा, उनको response मिल रहा. Then based on that response, hospital staff will take action. फिर यहाँ से add room. Here you can see these are, and then अब जैसे room details है, तो room का अपना एक database, because जैसे आपको पता है कि आप रिजर्वेशन कर रहे हैं, रूम रिजर्वेशन हॉस्पिटल में, या मूवी टिकट के लिए मूवी का जो सीट रिजर्वेशन कर रहे हैं, तो once the seat is occupied, you cannot allocate that same seat or same rail berth or same hospital room to another person. तो ये यहाँ पे आपका रूम रिकॉर्ड में वहाँ पे इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाएगा, और जब वो रूम एम्प्टी हो जाएगी तो वापस से उसको अपडेट किया जाएगा. तो ये डॉक्टर्स का रिकॉर्ड. सो दिस इज अबाउट द हॉस्पिटल मैनेजमेंट. You can just Google out and you can get much information regarding these things. But the first thing is important thing before even drawing the DFD is your understanding about your system. तो आपका सिस्टम का जितना अंडरस्टैंडिंग क्लियर होगा उतना आप अच्छा DFD बना सकते हो, और जितना आपका अच्छा DFD बनेगा उतना आपके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के जो टीम मेंबर्स है या स्टेक होल्डर्स है, दे विल अंडरस्टैंड और वो अपना इनपुट वहां पे शेयर करेंगे. बिकॉज समटाइम्स वी मे मिस आउट सम ऑफ द थिंग्स, बट द अदर पर्सन इफ ही और शी कैन अंडरस्टैंड देन ही और शी कैन ऐड दैट थिंग. ये एक ऑनलाइन शॉपिंग के लिए भी आप देख सकते हो. सो ओके, आई हैव अनदर सेशन, सो I should leave this meeting. I hope you understood. If you have any doubt, you can also ask later. Okay. I hope you have my number. So if you have any queries or if you need further information, you can approach me later on. Thank you. Okay, madam. Thank you, thank sir. you, madam. Thank you, sir. Thank you. Okay, madam. Thank you, Ambekar sir, for briefing students about DFD. Thank you.
So students, I hope you got an idea about what data flow diagram is. So, sir, can you please share this document with students? Yeah, I will share later. Okay. So sir will be sharing this document. You can use it for your reference. And if you have any doubts, you can later on contact sir, or you can also discuss with your respective guides. Okay. So whatever knowledge you have gained from this session, you will be making use of that to create the data flow diagram of your mini project. And then you will include the diagram in your report, and you'll get your whatever content you're adding in your mini project, you'll get it verified by your respective guides. Okay. So how much time? We have 10 more minutes left. So we'll discuss the examples which I've given as homework in yesterday's session, and then we'll wind up. Okay. So I'd given you a homework question on linear probing, right? Has everybody done that question? Have you solved that question? What were the values? What were the values? 28. Take your notebook. Quick, take your notebook. Those who have done it, give me the answer. What were the values? 28, 55, 71, 67, 11, 10, 90, and 44. This was the values which I gave, and the hash table size was given as 10, right? So if anybody has solved this question on linear probing, just give me the answer. I'll draw the table over here, the final table, okay? So I assume that you have solved this example. Okay. So hash table size is 10. 5, 6, 7, 8, 9. Tell me what is the answer? How many of you have solved it? How many of you have solved it? Has anybody solved this example? Yes or no? Yes, ma'am. Give me the answer. What is the position of 28? 8. 8. Okay. 55? 5. 5. Yes. 71? 1. That would be obviously 1. 67 would be obviously 7 only, right? Yes. Yes. 11? Now we have a collision, right? Yeah, For 11, you have a collision, correct? Yes. Collision number 1. So you got it. There's only one collision for 11, na? Yes, Yes, ma'am. ma'am. Yes. So 11 is coming here. Then 10? 0. 0. Obviously 0 only. 90. So for 90, you have collision number 2, right? This is the second collision. Yes, So ma'am. where is 90 getting stored? 3. 3. Yes. 3. So for 90, how many collisions you have? 3 collisions. 3 3 collisions. means 2, 3, and 4. Collision number 2, Yes. collision number 3, and collision number 4. Yes, ma'am. Right? 3 Yes. na? यहाँ पे Yes. store हो रहा है ना? Okay. Yes, ma'am. And 44 will obviously be in 4. यहाँ Yes, पे 4. -1, यहाँ पे -1. So this will be your final status of your array after doing linear probing, correct? So I hope everybody has solved this. Yes. Yes, ma'am. 90 के collisions थोड़ा confuse हो गया मैं. क्यों 90 मतलब का? collisions हाँ. तो पहले तो 10 के साथ हो रहा था 0 पे. हाँ. The second collision was where? Second I value you incremented, right? Yeah. So when you incremented I value means I value आपने 1 लिया. तो 1 लिया तो आपको फिर से collision आ रहा है ना? हाँ, ma'am. Okay, so we moved it to 3 places. हाँ. है ना? हाँ, समझा. 3 बार आ रहा है ना collision? हाँ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ. So total number of collisions in this example would be 4, right? Yes, ma'am. I'm actually वो आपने last lecture में बोला था ना increment करना भूल जाते कभी-कभी वापस 0 से. तो मेरा वो हुआ इसलिए गलत आ रहा था. हाँ, okay. So this was the first homework question. Those who have not done it, please try it on your own and see whether you're getting the same answer or not. बहुत simple है. If you get this question, it will easily fetch you 8 to 10 marks. हाँ, सिर्फ आपको वो formula apply करना है बस. So this is linear probing. I had given you an example on quadratic probing also. So let's discuss the answer for that also, and then we'll wind up. Okay.
ये वाला the question was this. Values were 72, 27, 36, 24, 63, 81 and 101. C1 का value था 1, C2 का value था 3 and our formula is this, right? H of ki is equal to h dash k plus C1 into I plus C2 into I square mod m, right? Yes, ma'am. तो final answer क्या है बताओ? We'll check with the final answer. I'll Ma'am, draw the. 72 का I'll draw. 72 का 2 होगा. एक Hello, minute. ma'am. One. Wait. Let me draw the array. This is 0. This is 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. हाँ. अभी बताओ. Where is 72 getting stored? 2. 2. Correct. 27 will be at 7. 7. 36 will be at 6. 6. 24 in 4. 24 in 4. 63 in 3. 63 in 3. 81 in 1. 81 in 1. 81 in 1. And 101 in 5. For 101 you will get a collision because Yes, ma'am. 81 0 पे आ रहा है क्या? 1 पे मैम. 1 पे. 81 will not come in 0 ना, 81 will come in 1. मैम 1 में ही बोला ना मैम. 1 में आएगा. अच्छा आपने 1 ही बोला था. Okay. हाँ मैम. हाँ. So for 101 you will get a collision. For 101 how many collisions you are getting? Ma'am, 3 why collisions. 1? 4. 4 collisions. Yeah, 4 collisions. हाँ, Okay. 4 sorry. 4 collisions 4. and it is getting stored at location 5. मतलब यहाँ पे -1, यहाँ पे -1 और यहाँ पे भी -1. So this will be your final answer. Let's go and check the final answer. तो बस आपको substitute करना है formula में. Okay, you just have to learn this formula and substitute that values, C1, C2 values you'll get. So for 72 it is 2, for 27 it is 7, for 24 it is 4, for 63 it is 3, for 81 it is 1, and for 101 we have collisions. So for 101 you'll get 4 collisions and you'll get 5 as the correct position of 101. Okay, so 101 will get inserted at 5, and so the answer that you have told me is correct. So this will be the final status of your array. Yes, ma'am. So this is what is meant by linear probing and quadratic probing. Those who have not done it, work it out till tomorrow. Okay, tomorrow I have borrowed Krupi ma'am's lecture for DS. So we'll have the last session, data structure session tomorrow. There are just 2 or 3 small topics, that is double hatching, rehashing and chaining, which is left to be discussed in this last chapter. We'll be completing the last module tomorrow. Okay. Have you all marked your attendance? Yes, ma'am. So if you mark your attendance, you can leave. We'll be discussing the rest of the topics tomorrow. Okay. And for unit test, portions are 4th, 5th and 6th module. Okay. Entire 4th, 5th and 6th module. All the notes are uploaded. All the lecture PPTs are also uploaded. Okay. Thank you, ma'am.